Hello students, I hope you're doing perfectly fine. In our video series of me training you, teaching you, coaching you, partnership final accounts, we have moved on with a good level ahead. You can say we no longer are at a amateur level, but we are somewhere in the middle of it. Not still a professional, but somewhere in the middle. As usual, if you have missed out previous lectures, so there is a card being provided to you right now for the previous lectures. There will be a link being provided at the very end. It's my duty. I'm just doing that and reminding things to you. In today's question, what is the extra important thing? That is something called as hidden adjustment. Hidden adjustment आपने 11th में जरूर किया है पिछले साल में, 12th में ये काफी कॉमन होता है. तो आज के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं दो टाइप के हिडन एडजस्टमेंट आपको पढ़ा देता हूं. हिडन एडजस्टमेंट की काफी ज्यादा वैरायटी होती है, पर हिडन एडजस्टमेंट होता क्या है, उसको लिखते कहां पर है, उसको फिर आखिरकार सॉल्व किस तरह करते हैं. ओके, सो दैट विल बी वन एस्पेक्ट ऑफ टुडेज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड remaining stuff, remaining items in the trial balance and the balance sheet and the adjustments to come, they will pretty much remain the same. Okay, all of that will be kind of a repetition for practice purposes, but it is the two hidden adjustments that I want your concentration on. Fine. So without wasting any of your time, let us have a look at our question today. Here goes. Okay students, this is your question for the day, which is Tommy and Jelly are partners. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet date. क्वेश्चन में ज्यादा कोई चेंज तो होते नहीं है, इसका स्टार्ट लगभग ऐसा ही रहता है. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज स्टेप नंबर 1, जो है मार्क दिस पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस. तो वन बाय वन डेबिट साइड के आइटम से स्टार्ट करते हैं. इफ समथिंग इज रिपीटेटिव, आई विल नॉट गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन एज सच फॉर दैट. कुछ नया रहेगा, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट. फर्स्ट आइटम, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, किसी तरह की जायदाद होगी देन दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी. शहर में हो सकती है, गांव में हो सकती है. प्रॉपर्टी यू कैन थिंक, क्या आपको फायदा देता है? डेफिनेटली हो सकता है आपके डैडी को फायदा दिया था, उसके बाद में आपको फायदा दे रहा है. सो प्रॉपर्टी इज यूजफुल इन फ्यूचर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन एसेट. हाँ, फर्स्ट वर्ड है फ्री होल्ड. होल्ड का मतलब क्या है? कंट्रोल. फ्री का मतलब क्या है? किसी का कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है. प्रॉपर्टी आपकी है और कंट्रोल भी आपका है. कभी कभी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कुछ लोन लिया जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली जिससे लोन लिया है ना, उसका प्रॉपर्टी के पेपर्स पे कंट्रोल आ जाता है, तो फिर उसको दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी का नाम दिया है. फ्री होल्ड का मतलब आपका प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में काम आएगा. नेक्स्ट आइटम इज बिल रिसीवेबल. रिसीवेबल का मतलब है फ्यूचर में आपको पैसा मिलना है. ओके, दैट इज एन एसेट. नेक्स्ट इज फर्नीचर. फर्नीचर पे आप आज बैठ सकते हो, कल बैठ सकते हो, सालों साल बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. Therefore it gives a benefit in future, that is also an asset. Drawings is connected to partners, therefore it will go to partners capital account. Factory rent. Factory rent is फैक्ट्री का खर्चा है, तो आपको फैक्ट्री में लिखना है. अगर ऑफिस रेंट देंगे तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है. कभी कभी सिर्फ रेंट देते हैं. In that situation, you will assume it to be office rent and write it in profit and loss account. But right now, factory word specify किया है, इसके लिए it will go to trading account. Salaries is the payment that you do to the office employees. Therefore, it will go to profit and loss account. Then is the important item for today, the first important item for today, जिसके बारे में मैंने कहा कि हम लोग आज hidden adjustment सीखने वाले हैं. What is a hidden adjustment? You see, एडवर्टाइजमेंट के आसपास में, एडवर्टाइजमेंट चेहरे से बड़ा इनोसेंट लगता है. एडवर्टाइजमेंट का मार्किंग क्या होता है? पोस्ट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद मतलब कनेक्टेड टू ऑफिस, तो उसका मार्किंग है प्रॉफिट एंड लॉस. डेफिनेटली देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट, बट ब्रैकेट में आपको दिखता है
for 3 years. Now please understand, for 3 years का मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है. ओके, आपको यहाँ पर वो गड़बड़ ढूंढना पड़ेगा. Now why am I saying कि इसमें एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, साइलेंट एडजस्टमेंट है, क्योंकि लेटर ऑन अगर आप एडजस्टमेंट का लिस्ट पढ़ो, फुल लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7, you will notice that there is nothing connected to advertisement. Therefore इसमें हिडन एडजस्टमेंट है. नाउ क्या हिडन एडजस्टमेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? राइट नाउ हम लोग से मार्किंग करते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट का मार्किंग. वो क्या है? स्टार मार्क. ओके, सो यू लीव अ लाइन एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट ड्यूरिंग द सोल्यूशन. नेक्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक. इट इज अ प्रीफिक्स्ड आइटम. बाय दैट व्हाट डू आई मीन, पहले से ही लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. नेक्स्ट इज कैश एट बैंक. काम आता है आज कल परसों, बैंक में पैसा रहेगा तो वो यूजफुल है, देयरफॉर एन एसेट. प्लांट एंड मशीनरी. मशीनरी का मतलब क्या है? यूजफुल इन फ्यूचर. मशीन आपको काम करा के देती है, देयरफॉर इट इज एन एसेट. फैक्ट्री बिल्डिंग. हियर देयर कैन बी अ कंफ्यूजन. आप बोलोगे सर आपने बोला था फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग क्यों मैं एसेट बोल रहा हूं? प्लीज याद रखना, रेंट 2 महीना 3 महीना 4 महीने का हो सकता है, बट बिल्डिंग 2-3-4 महीने का नहीं होता. बिल्डिंग इज फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक काम आता है. इसके लिए बिल्डिंग एक एसेट है. वो कोई भी बिल्डिंग रहने दो, वो प्रोडक्शन की बिल्डिंग हो, ऑफिस की बिल्डिंग हो, स्टाफ की बिल्डिंग हो, अ बिल्डिंग विल ऑलवेज रिमेन एन एसेट. नेक्स्ट, डेटर्स. डेटर्स में आप क्या मार्किंग करोगे? डेटर्स कस्टमर्स है, देयरफॉर दे आर एन एसेट. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा आता है. बैड डेट का फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज फिक्स्ड, सो इट इज प्रॉफिट एंड लॉस. रिटर्न इनवर्ड इज अनदर वर्ड फॉर सेल्स रिटर्न, देयरफॉर इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. 10% इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ये आज का सेकेंड अहम मुद्दा है. दैट मीन्स दिस इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट आइटम. इफ यू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट डज दैट मीन? गुड फॉर टुमारो, कल ये काम आएगा. कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, आप करोगे, आपके मम्मी डैडी ने किया था, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने इन्वेस्टमेंट किया था. ओके, इफ यू इन्वेस्ट, दैट इन्वेस्टमेंट इज यूजफुल इन द फ्यूचर. एग्जाम्पल, when you are undergoing education, what does that mean? You are going for college, you are going for school, you are attending lectures, you are putting in a lot of time in it. वो फ्री का थोड़ी है, आपको दिन के 8 घंटे 6 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ता है. नाउ इज दैट यूजफुल इन फ्यूचर? डेफिनेटली. वट एवर प्रोफेशन, आप कोई भी काम फ्यूचर में क्यों ना करो, मोस्ट डेफिनेटली जो मैथ्स की पढ़ाई आपने की है, जो अकाउंट्स की पढ़ाई आपने की है, जिसमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, इट्स नॉट अ वेस्ट, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल इन फ्यूचर. सो इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, पर वो फ्यूचर में काम आता है. Therefore, the marking for investment is an asset. But today, इसके बाजू में देखो क्या है, 10%. Now please याद रखना, इधर भी कुछ तो गड़बड़ है. मतलब क्या गड़बड़ है ये हमको बाद में देखना है, बट राइट नाउ इतना रियलाइज करो. ऊपर मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट के बगल में 3 years, 4 years, 5 years, मतलब hidden adjustment. And even in investment, when there is a percentage, 10%, 8%, 20%, that means there is a hidden adjustment. So please, you have to make sure that there is a star marking for it. Okay, remaining we will continue during the solution, the explanation of it. Then it says ahead, for on 1st October 2018. Now just keep in mind, what does this mean? ये इन्वेस्टमेंट आपने कब खरीदा? 1 अक्टूबर. उसके पहले ये इन्वेस्टमेंट नहीं था. ओके, तो कितने महीनों के लिए था? इसके बाद काउंटिंग करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. मार्च में खत्म करो, एंड ऑफ द ईयर. सो दिस इज फॉर 6 months. जस्ट कीप इन माइंड, ये लेटर ऑन काम आएगा. डेबिट साइड इज ओवर, क्रेडिट साइड. Capital goes to partners capital account. Sales is a trading account item. Bill payable, tomorrow I will pay, it's a liability. Discount is a mind calculation, therefore profit and loss. Creditor, tomorrow I will pay, therefore it is a liability. RDD means it is connected to the formula of bad debt. So because it is in the trial balance, ये होता है
ओल्ड आरडीडी, क्योंकि लेटर ऑन आपको दिखेगा यहाँ पे क्रिएट आरडीडी, तो ये कौन सा है, न्यू आरडीडी. सो राइट नाउ ट्रायल बैलेंस में यू हैव अ ओल्ड आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैंक लोन अपना पैसा नहीं है, पराया पैसा है. टुमारो आई हैव टू पे, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी. Return outward is purchase return connected to purchases which comes in trading account. All of these are your trial balance items. We continue with adjustments. These are called as visible adjustments. ये adjustment दिखते हैं, जो पहले दो चले गए ना, एडवर्टाइजमेंट और इन्वेस्टमेंट, वो दिखता नहीं है, तो उसको नाम दिया हिडन एडजस्टमेंट, और ये वाले एडजस्टमेंट्स विजिबल दिखाई देते हैं. फर्स्ट इज स्टॉक ऑन हैंड. ये होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अपने पास 31 मार्च को जो अपने हाथ में है, जो हम उठा सकते हैं, वो हमेशा होगा क्लोजिंग स्टॉक. उसके लिए कोई भी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है. सेकंड, गुड्स ऑफ 8,000 वर स्टोलन. अगेन इसके लिए कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, इसका हम अलग से डेबिट और अलग से क्रेडिट लिख देंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग्स पढ़ लो. मिस्टर ब्रूटस कौन है, किसी का तो नाम है, कौन है हमारा, कस्टमर. ओके फाइन, कस्टमर का मतलब यू कैन से डेटर, यू डेफिनेटली कैन से कि ये हमारा डेटर है. क्या हो गया इसको, एक्चुअली इसके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि कहा है बिकेम इंसॉल्वेंट. व्हाट डज दैट मीन, कि ये कंगाल हो गया, इसका बिजनेस डूब गया होगा, इसने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए रहेंगे. एंड क्या बोला है, कुड नॉट पे, नहीं भर सकता है. कितना, 5,000. ब्रूटस को हमको देना था 5,000, वो 5,000 नहीं दे सकता, तो मतलब हमारा क्या हो गया, नुकसान ना, बैड डेट. पर कौन सा बैड डेट, एडिशनल बैड डेट. नाउ प्लीज नोट, यहाँ पे वर्डिंग है ही नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द मीनिंग ऑफ दिस एडजस्टमेंट सेज दैट ब्रूटस हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही कैन नॉट पे 5,000. सो फ्रॉम डेटर्स यू विल नॉट 95,000, यू विल नॉट गेट 5,000. तो आपको ब्रूटस का नाम डेटर्स में से निकाल देना है. Therefore, this is third adjustment is additional bad debt and it affects debtors. 1 star for debtors. Then fourth adjustment, create RDD at 5% on sundry debtors. What is the full form of RDD? Reserve for doubtful debt. So you have a doubt on your debtors. Same, yahi debtors. So you have to put one more star on them. So 2 stars. 2 stars means you have to leave 3 lines. फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग. तो फैक्ट्री बिल्डिंग को आपको 1 स्टार करना है. एंड फर्नीचर, तो फर्नीचर को आपको 1 स्टार करना है. सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अ न्यू एडजस्टमेंट फॉर टुडे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. नाउ व्हेन आई से दिस will have 2 effects, which is obvious, but you don't have to put a star mark for this. किसी के लिए आपको कैपिटल को मार्क करने की जरूरत नहीं है. ये एडजस्टमेंट जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, इसका अपने आप टू बाय डेबिट क्रेडिट आ जाएगा. द एंटायर एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन अबाउट दिस in the remaining part of the lecture whenever the adjustment comes. So right now please don't worry, don't mark anything for interest on partners capital. Seventh is only information. Partners profit sharing ratio is in their respective capital. Capital is 75,000, 50,000. If you look here, if you do cancellation, 3 zeros, 3 zeros, you get 75 is to 50. Then I am taking the table of 25. आप कोई भी table ले लो, after cutting you will get 3 is to 2. 25 3s are, 25 2s are. So it is 3 is to 2, which means 3 upon 5 and 2 upon 5. That is the total. अभी नहीं काम आएगा, later on when we will be doing the next step. Okay. So all the items in the trial balance and the adjustments have been marked. If we go to our step number 1, mark the trial balance has been successfully completed by us. Step 2, empty the trial balance, for which we have to look at a question. Freehold property will be transferred on the asset side. So in the balance sheet, please asset side पे आप लिख लीजिए 1,50,000. Moving on, bill receivable is also an asset, 75,000 in the balance sheet on the asset side. Next, furniture, it is an asset, but it has adjustment. Somewhere here you have furniture by 4,000, depreciate furniture by 4,000. So when you write in the balance sheet, you have to leave one line. Next one is drawings.
Drawings is Tommy 10,000, Jelly 10,000. This is to be transferred to the partner's account because it belongs to the partners. 10,000, 10,000. Next, फैक्ट्री रेंट, क्योंकि फैक्ट्री का भाड़ा है 5,000, ये आप फैक्ट्री में लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फैक्ट्री रेंट 5,000 आ जाएगा। उसके आगे सैलरीज, ये ऑफिस जो आते हैं उनका पगार है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है 15,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिख लीजिए 15,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, इसमें नया है का मतलब फॉर 3 years ऐसे कुछ कहा है, बट इसके बारे में फिलहाल चिंता मत करो, जस्ट इतना ही ध्यान दो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब प्रोडक्शन के बाद एडवर्टाइजमेंट होता है 6,000, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लो क्योंकि एक एडजस्टमेंट है, 1 line इज लेफ्ट। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना। कैश एट बैंक इज एन एसेट, लगभग सारे क्वेश्चंस में ये आया है, एसेट साइड पे ही इसका पोस्टिंग होता है। आगे प्लांट एंड मशीनरी 50,000 एसेट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट में जस्ट राइट प्लांट एंड मशीनरी 50,000। मूविंग ऑन, फैक्ट्री बिल्डिंग, it is also an asset but it has one adjustment 40,000, please leave 1 line. Next is sundry debtors 95,000, asset है, हमेशा asset था, 2 स्टार का मतलब leave 3 lines 95,000, go to the balance sheet, write 95,000 and leave 3 lines 1 2 3. Okay, I hope that's understood. Next is purchases trading 1,20,000, go to trading account, write 1,20,000. Next one is bad debt, there is a formula of bad debt in profit and loss account, inner column. Okay, so the amount of bad debt is 3,000, so you go and you write in the inner column 3,000. Continuation, return inward is sales return connected to sales, sales कहाँ पे लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके लिए ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिख दीजिए 4,500। कंटिन्यूइंग, 10% इन्वेस्टमेंट, राइट नाउ इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, आपको इतना ही जानना है। डू नॉट वरी अबाउट 1 October 2018, इसका मतलब क्या है, 60,000 एसेट साइड पे जाएगा, एक स्टार है तो आपको एक लाइन खाली रखना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। सो एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट 60,000, लीव 1 line blank. These are all your debit items. Credit side, first item, capital account, partners capital. Tommy 75,000, Jelly 50,000. Partners के साथ connected है तो उनका opening capital है 75,000, 50,000. Beyond that, next item is sales connected to trading account 5 lakhs. Next is bill payable, liability. Tomorrow you have to pay 45,000. कल आपको ये पैसे देने हैं. Leave around 4-5 lines blank on the liability side, then write bill payable 45,000. Continuing, discount is a mind calculation 7,000. So profit and loss. Important, discount कौन से साइड पे है, क्रेडिट. Therefore आप भी उसको क्रेडिट में ही लिखना, गलती से डेबिट में मत लिखना. By discount 7,000. Creditor liability, people that you have promised to pay 90,000. कल आप इनको पैसे दोगे, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 90,000 क्रेडिटर. नेक्स्ट, RDD, you have a formula in the profit and loss account which has new RDD, old RDD. Right now the only doubt you should have, सर ये कौन सा RDD है, न्यू है कि ओल्ड. ओल्ड का आप GPS मतलब क्या है, पोजीशन देख लो. टी का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस, और राइट नाउ आप पढ़ क्या रहे हो, ट्रायल बैलेंस. Therefore this is old RDD 1,500. तो इस फॉर्मूला में आप 1,500 लिख लो. नेक्स्ट इज बैंक लोन, हमारा तो पैसा है नहीं, पराया धन है, कल देना पड़ेगा, इसके लिए लाइबिलिटी 2 lakhs. नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट आइटम फॉर ट्रांसफर which is return outward. It is purchase return 5,000 and in purchase return is written in trading account. So here 5,000 rupees. Now that you have a look at your question, you have transferred everything from the trial balance. When you do this, you have to go to your steps. Well, आप लोग उसको नोटबुक में नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ,
कि एम्प्टी द ट्रायल बैलेंस का आपका ये जो सेकेंड स्टेप था ये हो चुका है. Now students, we will be starting step 3, which is solve adjustments. For this, let's have a look at a question. In the question, visible are 7 points in adjustments, but what you should know that there was something called as hidden adjustment. Now, where was this hidden adjustment? If you look at advertisement, it said for 3 years. So this is a hint whenever it says for 3 years, 2 years, 4 years, that there is a hidden adjustment. Now students, this is the detailed explanation of hidden adjustment on advertisement. ट्रायल बैलेंस में आपने देख लिया था कि एडवर्टाइजमेंट के बगल में दिया था फॉर 3 years. Now you have to understand हिडन एडजस्टमेंट कैसे पता चलता है. एनी आइटम ट्रायल बैलेंस के बगल में अगर कहता है फॉर 2 years, 3 years, फॉर 15 months, 18 months, 22 months, मीनिंग 12 महीने से अगर वो खर्चा आगे जा चुका है तो फिर उसमें हिडन एडजस्टमेंट पक्का होगा. क्योंकि 12 महीना क्यों कहते हैं? बिकॉज फाइनल अकाउंट्स, द चैप्टर दैट यू आर लर्निंग इज ओनली फॉर 12 months. तो अगर 12 महीने के आगे जाता है तो पक्का उसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन एडजस्टमेंट होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडवर्टाइजमेंट में कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है. ओके, कुछ टेक्स्ट है वो पढ़ लेते हैं. पहला सेज एनी एक्सपेंस शुड बी पेड नॉर्मली फॉर 12 months. क्योंकि एक साल का फाइनल अकाउंट्स होता है तो कोई भी खर्चा, रेंट होगा, डिस्काउंट होगा, कमीशन होगा, इंश्योरेंस होगा, वो 12 months का ही आपको पे करना है. यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं है. पर तो भी कुछ बिजनेसमैन एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं. वो 12 महीने के जगह पे 15 मंथ का करते हैं. कोई 20 महीने का करता है, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का करता है. भी ऐसे क्यों उनको करना पड़ता है, आगे देखते हैं. इफ इट इज पेड फॉर मोर देन 12 months, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, तो फिर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट या एडवांस पेमेंट कहते हैं. एंड सच एन एडवांस पेमेंट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस. जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज एडवर्टाइजमेंट. एंड फॉर हाउ लॉन्ग इज इट पेड? फॉर 3 years. मतलब 3 साल में कितने साल है? सिंपल ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर बराबर है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट्स भी 1 साल का होता है. बट उसके बाद जो गाड़ी आगे चली गई एडवर्टाइजमेंट की, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, वहां पे वो एक्स्ट्रा बन गया है. मींस इट इज पेड एक्स्ट्रा फॉर 2 years. तो ये 2 years जो एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके, नाउ क्यों कंपनीज एक्स्ट्रा भरती है? क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है, जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, आप फ्यूचर का पेमेंट करते हो, तो कंपनीज को बेनिफिट मिलता है. कंपनीज को ही नहीं, किसी को भी. अगर कुछ टाइम के बाद में एक मूवी रिलीज होने वाली है एंड आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो देखना है, तो यू विल नॉट गो. अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे ही डायरेक्टली जाओगे टिकट खरीदने के लिए, और कोई बड़े फिल्म स्टार की वो बुकिंग है, वो फिल्म है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको सीट मिलने वाली नहीं है. तो लास्ट मोमेंट पे भागना नहीं है, आपको एडवांस में ही उसका बुकिंग करना था. एडवांस में बुकिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी जो मनचाही सीट है वो पक्का मिल जाएगा. दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं प्रीपेड का. आप में से काफी लोगों ने बस का पास लिया होगा या ट्रेन का पास लिया होगा. नाउ व्हाट इज अ बस पास? ट्रैवल तो आप कल परसों करने वाले हो ना, पेमेंट आप पहले ही कर देते हो, 1 महीने का, 2 महीने का. ट्रेन का पास भी आप 3 महीने के लिए निकाल सकते हो. When you take a bus pass and a train pass, do you have to stand in line to take a ticket every day? No, आपको कतार में खड़ी रहने की जरूरत नहीं है. इसके लिए, ताकि आपको हर दिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, लाइन में खड़े रहने से आप पैसे पहले ही दे देते हो, तो दैट गिव्स यू अ बेनिफिट. तो कंपनी भी कभी कभी फ्यूचर का पेमेंट एडवांस में कर देती है, एंड इंडिविजुअल्स, आप जैसे बच्चे भी कभी कभी फ्यूचर का पेमेंट एडवांस में कर देती है. दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड.
कमिंग बैक टू दिस एडजस्टमेंट, हाउ डू वी फाइंड आउट कि एडवर्टाइजमेंट में प्रीपेड कितना है? लेट्स मी एक्सप्लेन दिस टू यू. हाउ टू कैलकुलेट? For 3 years, 6,000. Now, this is not calculated by you. ये already ट्रायल बैलेंस में दिया था कि 3 साल का 6,000 है. आपको क्या ढूंढना है? What is your question? Your question is एक्स्ट्रा कितना है, मीनिंग प्रीपेड कितना है, और प्रीपेड 2 साल का है, तो यू हैव टू फाइंड आउट 2 साल का कितना. 3 साल का 6,000, तो 2 साल का कितना, क्वेश्चन मार्क. मीनिंग करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज हाउ इट लुक्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2000 into 6000 divided by 3. Now I very well know आप में से सभी को ये कैलकुलेशन आराम से आता होगा, but still for some students जिनका हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा स्लो हो, मैंने यहाँ पे बता दिया है that you have to do the calculation, you have to do the cancellation. So when you divide by 3, you get 2000 multiplied by 2, which gives you the answer of 4,000. This is what is prepaid advertisement. Now let us give the two effects of prepaid advertisement. Prepaid is solved as follows. Because it is kal ka kharcha, it has to be deducted. So this is how we write it. Hidden adjustment. This is just to clarify. You do not have to write it in your examinations. Just to help you. You do minus prepaid advertisement 4,000, and the second effect is on the asset side. Why is it so? Because prepaid is useful in future. After that, you go back to the question, and in this question, if you look at the last item on the debit side, you had 10% investment. Again, quick reminder, whenever you have a percentage in the trial balance, it means there is a hidden adjustment. So we had put a star mark to it. The hidden adjustment is this time on investment. Let me give you the detailed explanation of how do you solve the hidden adjustment on investment. What have I mentioned? When there is a percentage sign, please understand that there is a hidden एडजस्टमेंट. ओके, एक सीरियल आता है जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे से कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया, तो आप भी समझ जाओ कि अगर परसेंटेज दिखता है कुछ तो गड़बड़ है. थोड़ा सीआईडी का आपको उसके अंदर घुस के इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस. इन्वेस्टमेंट इज मेड विद एन इंटेंशन दैट सच इन्वेस्टमेंट विल ग्रो इन द फ्यूचर. मतलब क्या है? अगर आप या तो आपके मम्मी डैडी कहां पर भी एक बीज बोते हैं, ओके, लेट्स से छोटा सा मैंगो का सीड डाल दिया, कोई भी फल के जो झाड़ होते हैं, ओके, पौधे होते, उसका आपने छोटा सा एक सीड कहां पे डाल दिया. आप क्या चाहते हो कि वो मर जाए? बिल्कुल नहीं. आप चाहते हो कि वो जो सीड है, वो बीज जो है एक बड़ा सा पौधा बनना चाहिए, तो वो ग्रो होना चाहिए. बराबर, आप उसको पानी डालकर सींचते हो, यू टेक केयर ऑफ इट. उसी तरह बिजनेसमैन भी ऐसा ही करता है. उसके पास जो पैसा होता है वो उसको इन्वेस्ट करता है, बैंक में डालता होगा, कंपनी में डालता होगा, ओके, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डालता है, एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है वो बढ़े. जैसे ही समय आगे जाता है वो बढ़ना चाहिए, इट हैज टू इंक्रीज. सो इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होता है, उस इंक्रीज को क्या कहते हैं? सच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब आपने बैंक में डाला 100 रुपया, पर 2-3 साल के बाद में वो 100 नहीं रहेगा, उसमें 10 या 20 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. सो यहां पर हिडन एडजस्टमेंट किस बारे में है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग राइट नाउ. Okay, now how do you calculate? Please note, any percentage means what? 2%, 5%, 10%, 15%. How do you calculate a percentage? Let's see. You calculate it with a formula called as ART. A multiply by R multiply by T. Now please ये अपने दिमाग में ताला बंद कर लो कि कोई भी चैप्टर क्यों ना हो,
कोई भी साल क्यों ना हो, अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो अमाउंट, दिस इज व्हाट आई मीन, रेट और टाइम, ये तीन गुणों का होना, क्वालिटीज का होना जरूरी है। आप ये तीनों में से एक भी चीज भूल जाओगे, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना था? ओके, पहले यहां पर टाइम का इंफॉर्मेशन में बता देता हूं। द क्वेश्चन क्लियरली सेड दैट द इन्वेस्टमेंट्स वर मेड on 1st October and the investments were made on 1st October 2018 to 31st March 2019. If you count carefully, October, November, December, January, February, March, you get 6 months. मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 6 ही महीने का था, तो सिर्फ 6 महीने का आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द time of the investment. Now let us continue the calculation. Amount is 60,000. It is given in the question. Rate is 10%. If you are confused, rate is always upon 100. Please note that. ऐसा नहीं है कि सर ने अपने आप पैदा कर लिया, रेट जब भी देते हैं तो वो अपॉन 100 होता है। एंड टाइम कितना है? 6 upon 12. 12 क्यों? Because the final accounts is always for 12 months. Sometimes it will be for 4 months, so it will be 4 upon 12, 2 months, 2 upon 12. But in this sum, I have already given it to you that the time is 6 upon 12. Now, when you do this particular calculation, you have to basically keep on cancelling the amounts and try to find out what is the answer. I'll try to do that for you. It seems very, very silly for some of you, but this technique may be useful for those students who are a little bit slow with their mathematical calculations. So what am I doing? I'm just cancelling the common zeros, one in the numerator, one in the denominator. This is how it goes. One up, one down, again one up, one down. Further calculation is 6 ones are 6 twos are, and then you cancel with the 2 table and you get 3000. So the answer is 3000 of interest on investment. Now that you have understood the calculation, let us give the two effects of interest on investment. So now you go to 10% investment and just showing you that there is a hidden adjustment and we had to add interest on investment. It is like this, 3000. And the second effect is in the profit and loss account. Which side? Credit side. Why is it so? Because what you have just now written in the balance sheet, this plus interest on investment, this is a debit effect. Assets are debit. So you have to give a credit effect. And for that you have calculated interest on investment. It is a mind work. Therefore, you go to profit and loss account and on the credit side, credit the incomes and gains. You are giving the second effect. Again, back to our question. 2 hidden adjustments are over. One based on advertisement, another based on investment. Now, let us start the visible adjustments. वो adjustments जो दिखाई देते हैं. पहला, stock on hand on 31st March. 31st March लास्ट डे होता है, इसके लिए इसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे होता है? जहां पर गोडाउन होता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। सो लुक एट योर ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। फर्स्ट इफेक्ट 50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक कल, परसों, तरसों, फ्यूचर में काम आएगा। देयरफॉर इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में 50,000। नेक्स्ट इज गुड्स। द मोमेंट आप गुड्स देखते हो, मेरे को आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं और आपको भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। गुड्स देखा तो फट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, क्योंकि वहां पर गुड्स का इफेक्ट होता ही होता है। क्या हो गया? चोरी हो गया। 8,000 व स्टोलन। चोर आया और उसने 8,000 का गुड्स चोरी कर लिया, मतलब वो लेकर गया। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में देख लो, इसका फर्स्ट इफेक्ट आता है बाय गुड्स स्टोलन 8,000, और चोर
इतना भी ईमानदार नहीं है कि आपको आपके दरवाजे पे आके पैसा देगा। ऑब्वियस है आपको इसका पैसा मिलने वाला नहीं है। सो इसका सेकंड थिंकिंग क्या होता है कि ये पूरी तरह से लॉस है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। टू लॉस बाय थेफ्ट 8,000। ओके, नेक्स्ट वन, मिस्टर ब्रूटस आ कस्टमर। प्लीज नोट कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। सो ये डेटर, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। बिकेम इंसॉल्वेंट मतलब हमारा एक कस्टमर है जो कंगाल हो चुका है एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स ऑफ ₹5,000। तो हमारा कस्टमर हमको, क्योंकि वो कंगाल हो गया है, 5,000 रुपया नहीं दे सकता। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि आप उसको कॉल करो, 2-3 बुरी बातें बोलो, पर वो पैसे तो नहीं दे पाएगा ना। तो पैसे तो आपको भूलने ही पड़ेंगे। उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, इसको कहते हैं एडिशनल बैड डेब्ट। तो पहला इफेक्ट के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना है और डेटर्स में से इसको आपको सबट्रैक्ट करना है 5,000। सेकेंड इफेक्ट के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में आए, देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ बैड डेब्ट जिसमें एडिशनल बैड डेब्ट पहले से लिखा है, वहां पे ही आपको ये अमाउंट 5,000 सेकेंड इफेक्ट देना है। ओके, whenever you are confused with this formula, I am providing you a card. You can go to the specific video where this formula has been in detail explained to you. Now back to the question. Fourth adjustment says create. What does create mean? Naya, new RDD at 5% on debtors. RDD का full form क्या है? Reserve for doubtful debt. आपको डाउट है किस पर, डेटर पर, के 5% के कस्टमर्स आपके डेटर्स आपका पैसा लेकर हो सकता है कि भाग जाएगी। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अगर उसको थोड़ा भी डाउट हो कि नुकसान होने वाला है, वो पहले से ही तैयारी करता है। ही प्रिपेयर्स फॉर दैट। हाउ? बाय क्रिएटिंग अ रिजर्व। हाउ डू यू क्रिएट अ रिजर्व? You will have to do 5% calculation on debtors. So if you look at the balance sheet, in your debtors, the answer is 90,000. On 90,000, so now you forget 95,000 क्योंकि 5,000 वाला जो मिस्टर ब्रूटस था वो आपको तो पैसे बिल्कुल नहीं देगा ना। तो अभी आपके जो डेटर्स है वो सिर्फ 90,000 है। इन डेटर्स पे आपको 5% का डाउट है कि वो पैसे हो सकता है कि नहीं दे। क्योंकि वो नहीं देंगे ऐसा आपको लग रहा है, आपको माइनस करना है। RDD, this is the second effect. You calculate on 90,000. 90,000 पे आप 5% कैलकुलेट करोगे, आपको 4,500 आ जाएगा। This is the first effect actually. I'm sorry, it's not the second effect, but it is the first effect. Now, where do you give the second effect? You have to go to the profit and loss account और यहाँ पे लिखा है new RDD. It is here that you give the second effect, 4,500. Later on, इसमें जो हमको प्लस करना है, माइनस करना है, फिर ये आंसर हम बाहर डाल देंगे। बट दिस इज हाउ यू हैंडल एडजस्टमेंट नंबर 4। फिफ्थ, ये एकदम पुश्तैनी एडजस्टमेंट है, लगभग सब सम में आता है। डेप्रीशिएट, व्हाट डज दैट मीन? सब्ट्रैक्शन। फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 3,000। इनफैक्ट ये एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल है क्योंकि परसेंटेज भी नहीं दिया है। डायरेक्टली दे आर टेलिंग यू गो टू फैक्ट्री बिल्डिंग, 3,000 रुपीज आप माइनस करो, उसके बाद फर्नीचर में जाना, 4,000 माइनस करना। सो बैलेंस शीट में आप देख लो, फैक्ट्री बिल्डिंग से आपको डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है 3,000, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट उसका। एंड फर्नीचर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4,000, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। नाउ बोथ ऑफ दीज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ कैलकुलेशन, ओके, इट इज अ माइंड वर्क। तो वो सेकेंड इफेक्ट कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नुकसान होता है। अगर आपने एग्जाम्पल एक घड़ी खरीदी, अ वॉच, एंड आफ्टर 6 महीने 8 महीने उसका वैल्यू आपको क्या लगता है, ज्यादा होगा कि कम? कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप उसको ऑलमोस्ट एवरी डे पहनते हो।
तो उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, तो उसको जो वैल्यू कम होता है उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं, वो डेबिट में आता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट टू डेप्रीसिएशन. फैक्ट्री बिल्डिंग 3000 एंड फर्नीचर 4000. मूविंग ऑन, have a look at the question. Sixth point, it says provide interest on partners capital at 5% per annum. Our next adjustment mentioned interest on partners capital. Okay, इसका explanation क्या है, क्योंकि ये first time है, I will give it to you in a detailed manner. Capital क्या होता है? ओनर का पैसा. ओके, अभी अगर आपका खुद का पैसा हो और आप कहां पर उसको इन्वेस्ट करो, विल यू वांट दैट मनी टू रिमेन द सेम? नो, कोई नहीं चाहेगा कि अगर वो 200 रुपया डाल रहा है उसको बदली में 200 ही मिले. नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट. ओके, हाँ, तो उसी तरह ओनर ने भी पैसा बिजनेस में डाला है जिसको कहते हैं कैपिटल, तो वो भी चाहता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले उसके ऊपर. Okay, so let's understand the calculation of interest on partners capital. I have just given to you the statement. Since the partners invest in the business, what is that? Capital. वो capital business में डालते हैं. They expect, वो ही नहीं, सभी लोग expect करेंगे कि हमको कुछ extra मिले, something extra in return of their capital, which is called as interest on capital. Now, interest percentage होता है ना, मैंने थोड़ी टाइम पहले भी बताया. परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, एक फॉर्मूला है उसके लिए. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मालिक को आपको कितना इंटरेस्ट देना है, आपको मतलब बिजनेस अलग होता है ना, दुकान अलग होता है, दुकानदार अलग होता है, तो अभी दुकानदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे एक था टॉमी हमारा एक पार्टनर था. कैलकुलेशन वॉज A into R into T, which is amount into rate into time. Now all these elements are given. ये सारी चीजें दी है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था कि अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिख लेना, रेट की जगह पे रेट लिख लेना, टाइम की जगह पे टाइम लिख लेना. सो फॉर टॉमी द अमाउंट वाज 75,000, उसकी कैपिटल का अमाउंट. रेट था 5%, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया था. हाँ, टाइम नहीं दिया था. नाउ व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, वेरी सिंपल, सिर खुजाने की जरूरत नहीं. टाइम नहीं दिया तो 12 महीना लेना है, क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट्स 12 महीने का होता है. सो इफ यू डू दैट 12/12. ओके, कभी कभी वो अगर टाइम दे 6 मंथ्स तो 6/12 हो जाएगा, 9 मंथ्स तो 9/12, कुछ नहीं कहे तो 12/12. तो बेसिकली वो कैंसिल होके वो 1 ही हो जाता है. ये पूरा कैंसिलेशन आप कर लो. The answer of this will give you interest on capital for Tommy, which is 3,750. सेम स्टाइल का कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट जेली के लिए भी करना है. अगेन फॉर्मूला वही होता है, A इंटू आर इंटू टी, 8 फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम. उसका अमाउंट ले लो आप 50,000 इंटू रेट 5% इंटू टाइम 12/12. दोनों के लिए टाइम नहीं बोला था. प्लीज डू द नेसेसरी कैंसिलेशन. यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया नहीं है. एवरीवन यूजेस डिफरेंट टेबल्स, आप आपके हिसाब से टेबल यूज कर लो, कैंसिलेशन कर लो. यू विल गेट द आंसर फॉर जेली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच इज 2,500. नाउ दैट वी नो द कैलकुलेशन ऑफ interest on capital, let us give the two effects of this particular adjustment. Because it is an income for the partner, it is written on the credit side of the partner's account like this. By interest on capital, the calculation gave us the following answers: 3,750 for Tommy, 2,500 for Jelly. Please note, ये credit है, यहाँ पे आपने बाय लिखा है, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? इसके लिए आपने माइंड का कैलकुलेशन किया ना, तो माइंड का कैलकुलेशन ऑफिस में जाता है, डेबिट साइड, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो सेकेंड इफेक्ट इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टॉमी 3,750, जेली 2,500. Going back to the question, the seventh point says partners profit sharing ratio in their respective capital. This is not an adjustment, it is just an information. Ratio आपको कहां से लाना है?
इनके कैपिटल से 75,000 and 50,000. If you look at the explanation given to you, 75,000, 50,000 के cancellation के बाद आपको least form आता है 3:2. You cannot further reduce this. It means to say the ratio later on in the sum will be 3/5 and 2/5. So a last look at your question. You have done all your adjustments. I will repeat. You have done 2 hidden adjustments and you have done multiple visible adjustments. So looking at our steps, we can say step 3, solve adjustments, is over. Now we start with step 4, which is tally the accounts and balance sheet. Before you do that, please make sure that in every account, the inner column numbers are transferred to the outer column. Purchases, for example, 1,20,000 minus 5,000 gives you 1,15,000. Sales, 5 lakh minus 4,500 gives you 495,500. Go to the P&L account. Individually, wherever you have to do the plus and minus, please do it. Advertisement after subtraction will give you 2,000. The formula of bad debt, first 3 numbers are plus, then subtract 1,500. That will give you 11,000. Always go a little slow with this particular formula because the numbers are a little bit confusing sometimes. Depreciation, add it and put it outside. Whenever there is no sign, just make sure you know it is a plus sign. If it's not mentioned, it's an addition. So 3,000 plus 4,000 is 7,000. Interest on capital, again it is an addition. 3,750 plus 2,500 is 6,250. There is no calculation in partners' capital. On the balance sheet, on the liability side, there is no addition or deduction. But on the asset side, furniture minus depreciation, 3 lakh minus 4,000 will give you 2,96,000. If you look at factory building, 40,000 minus 3,000 will give you 37,000. Debtors, 95,000 minus 5,000 is 90,000. Please don't write this in the outer column. Then after the second adjustment, minus 4,500, then you put it in the outer column, 85,500. Lastly, investments plus interest on investment, 60,000 plus 3 gives 63,000. Now you start with the step of tally, casting. Go to the trading account. For this, 2 things we do. We find the total of the debit and the total of the credit. So the debit total, which is a pencil marking, that is not the official number but just a rough work. It is 1,32,000, and on the credit side 5,53,500. Now because the credit is heavy, it is written on both the sides and a difference is found out on the debit side. 4,21,500. Now what is this called? To gross profit carried down. So factory trading profit is called as gross profit. From here, from 2, you will transfer it to the credit side by writing by gross profit brought down. Please find the total of the debit and the total of the credit. The following are the totals: 49,250 in the debit, 4,31,500 in the credit. Now you will write the heavier side on both the sides, which is the credit total. And on the debit side, find out the difference, which is 3,82,250. What is this called? Net profit carried down. So the answer of profit and loss is called as net profit. This net profit, because this particular question has 2 owners, it will be distributed among both of them. Their names are Tommy and Jelly. There is a ratio which was at the beginning done and explained, 3/5, 2/5. You will use this ratio right now to distribute 382,250. Again a reminder, please do not use a calculator or any other digital device. Okay,
try your best to do this calculation on your own. So the share for Tommy is into 3/5, 229,350, and for Jelly is into 2/5, 152,900. This is 2 net profit. Now you have to distribute it to the partners. We have calculated, but now we have to distribute it. So you will go to their account, and on the credit side you will write by net profit brought down 229,350, 152,900. Then you will do the casting for both of these people. Tommy debit, I know it's very silly, but just for the heck of it, write it, because we are trying to follow a particular style. Debit total is 10,000, credit total is 3,08,100. For Jelly, it is again on the debit side 10,000, credit side 2,05,400. Now find out the answer for Tommy. The heavier side is the credit side, and the difference on the debit side is 2,98,100. You will do something similar for Jelly. The credit total is written on both the sides, and the difference on the debit side, 1,95,400. These two are the opposite of opening capital, meaning they are closing capital, since they are coming on the last day, in the last line. To balance, carry it down. When you say to balance, you will take it to the balance sheet on the credit side. When you go to the balance sheet, liabilities are credit. So here you will write it, capitals, the share, and Jelly share, and the total in the outer column, 4,93,500. The very last thing you do is to find the total of the liability and the total of the asset. This is not a rough total, but it is a fair total that you do. So on the liability you get 8,28,500, and on the asset side you get 8,28,500. So once again, whenever we get both of these totals correct, it's congratulations time for you as well as for me. Once this is done, the next step, which is tally the accounts and balance sheet, has been successfully achieved by us. So now this is going to be the task for today's lecture, जो आपको complete करना है. I'll explain the trial balance to you right now so that this can be done a little bit faster. The partners' names are Mike and Minu are partners. From the following trial balance and additional information, prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 19 and a balance sheet as on that day. Okay, let's just have a concentration on our trial balance. डेबिट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे मार्किंग करा के मैं दे देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाए. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, कॉपीराइट एसेट है. हाँ, जल्दी से, कॉपीराइट क्या होता है? वेल, कॉपी करने का राइट. ओके, नॉर्मली प्रोफेसर्स आपको बोलेंगे कि बच्चों मेहनत करो, एग्जाम में प्लीज कॉपी मत करो. तो ये वहां की कॉपी की बात नहीं हो रही है. अगर आप एक पिक्चर बना रहे हो, ओके, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म एंड आपको उसके अंदर किसी भी तरीके का गाना यूज करना है, ओके, तो फिर आपको जिसने ओरिजिनल गाना गाया है उसके पास जाना पड़ेगा और उससे कहना पड़ेगा मुझे आपका गाना कॉपी करना है. आजकल आपने देखा होगा काफी बार पुरानों गानों का, ओल्ड सॉन्ग्स का रीमिक्स होता है, तो वो विद परमिशन होता है, परमिशन लेनी पड़ती है जिस कंपनी ने वो ओरिजिनल गाना 10-20 साल पहले बनाया था, क्योंकि उनके पास क्या है? कॉपी राइट. ओके, अगर इंडिया के अंदर एक बिग बॉस सीरियल है, इंडिया के अंदर कौन बनेगा करोड़पति सीरियल है, झलक दिखलाजा सीरियल है, नाउ ये ओरिजिनल नहीं है. ये सीरियल के एंड में आपको हमेशा कुछ ना कुछ मार्किंग दिखेगा जहां पे कहा है कॉपीराइट. ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये सीरियल्स दूसरे कोई कंट्री में चलते थे और वो कंट्री से उन्होंने इंडिया के लिए उसको एडेप्ट किया है, थोड़ा चेंज करके.
इंडियन ऑडियंस के लिए. दैट मीन्स द प्रोड्यूसर ऑफ झलक दिखला जा ऑफ कौन बनेगा करोड़पति हैज गॉन टू अ फॉरेन कंट्री, हैज आस्क्ड दैट प्रोड्यूसर कि प्लीज गिव मी द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सीरियल. तो वो जब लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉपी राइट. मतलब जब आप कुछ बनाते हो आर्टिस्टिक जो होता है, ओके, तो आपके पास उसका कॉपीराइट होता है. अगर दूसरे किसी को आपकी जो ओरिजिनल चीज है लेनी है तो वो उनको आपके पास आना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे और फिर आपसे कॉपीराइट लेना पड़ेगा. आपने जेके रोलिंग या हैरी पॉटर के बारे में सुना रहेगा. ओके, देयर आर मेनी मूवीज मेड ऑन द बुक. पहले वो किताब थी, उसके बाद में उसके ऊपर पिक्चर बनी. सो जेके रोलिंग शी इज द ऑथर. तो जब पिक्चर बनी, पिक्चर बनने के पहले ओके ये कॉपीराइट खरीदे गए थे. तो जेके रोलिंग ने ये कॉपीराइट बेचे, प्रोड्यूसर्स को बेचे, तो उनको बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनके पास उनके बुक का कॉपीराइट था. सो मेकिंग दिस काफी लंबा हो गया, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज अ न्यू आइटम, सो आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग ओवर इट. So if you have a copyright, it means to say you can sell it in the future to somebody else. Okay, you can give the permission to somebody else to copy what you have done and you get money for it. That means it is good for you in future. Therefore, it is an asset. Furniture हमेशा asset रहा है. Fixture वो होता है जो दीवार के ऊपर लगाया जाता है, जो fixed होता है. Furniture का ही part है, therefore it is an asset. Drawings is connected to partners, therefore partners capital. Office rent, office का खर्चा है, इसके लिए P&L. Manager salary, manager normally office में बैठता है, इसके लिए profit and loss. Insurance आज के इस टास्क में important item है, first important item, क्योंकि insurance is actually P&L. Obviously ये marking तो है, पर क्या लिखा है, for 4 years. That means इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, स्टार मार्क. ओके, राइट नाउ जैसे ही आपको दिखा फॉर 4 years, 3 years, 6 years, 5 years, इमीडिएटली उसको स्टार मार्क करो. नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रायर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो प्लीज if for some reason you do not know it, please carefully look that particular segment where for 4 years, 3 years, hidden adjustment has been explained to you. Okay, so you should be able to solve this. Opening stock is trading account. Advertisement is profit and loss. Machinery is asset. Motor car is asset. These are simple markings, तो मैं ज़्यादा time नहीं ले रहा. Debtor is an asset. Purchases is trading. Bad debt is profit and loss account. This is connected to the bad debt formula. Return in word is trading because it is sales return. Investment is the second VIP item for the day. It is an asset as has been explained to you in the previous part, but there is a 10%. What does 10% mean? There is a hidden adjustment. Therefore, you put a star mark. So right now, please note, insurance 1 star, investment 1 star. अभी तक हमने जो visible adjustments है वो पढ़े नहीं है. Okay, we have not read that. Purchased on 1st October, October, November, December, January, February, March, 6 months. ये इन्वेस्टमेंट का जो लाइफ था वो कितने महीने का है, 6 months. ये याद रखना, आगे आने वाले कैलकुलेशन में काम आता है. क्रेडिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न, देयरफॉर ट्रेडिंग अकाउंट. लोन, लोन इज नॉर्मली अ लाइबिलिटी. और मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, आपने लोन लिया पर जिससे लोन लिया उसके पास आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा. ओके, उसको कहते हैं मॉर्गेज. बेसिकली लोन आपको लौटाना है, लाइबिलिटी. आरडीडी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये बैड डेट के फॉर्मूला के साथ आता है. ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में आया है. क्रेडिटर को आप कल पैसा दोगे फ्यूचर में, पेएबल, सो इट इज अ लाइबिलिटी. रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम रिसीव्ड. प्लीज नोट दैट. हाँ, ये पीएनएल में तो आएगा पर कौन से साइड पे, क्रेडिट. प्लीज इसको गलती से डेबिट में मत लिखना. डिविडेंड रिसीव्ड, ओके, रिसीव्ड है तो इनकम है, बट डिविडेंड का मतलब क्या है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, ओके, तो वो कंपनी आपको क्या देती है, डिविडेंड देती है. तो आपके जेब में तो आता है ना, आपके बैंक के खाते में आ जाता है. इट इज एन इनकम, देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड. बिल पेएबल, टुमारो आई विल पे, लाइबिलिटी. सेल्स, trading, simple markings. Capital is partners capital. Now this is the marking of the trial balance. If you look at adjustments,
स्टॉक ऑन हैंड ये होता है क्लोजिंग स्टॉक, देयर इज नो मार्किंग फॉर दैट. सेकेंड, गुड्स ऑफ 12,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके लिए भी कोई मार्किंग नहीं है, आपको अलग से डेबिट और अलग से क्रेडिट करना है. यू डोंट हैव टू पुट अ स्टार मार्क हियर. यस, थर्ड एडजस्टमेंट, मिस्टर प्लूटो, कौन है? कस्टमर. कस्टमर का मतलब डेटर. ओके, क्या हो गया उसके लिए? बैड न्यूज, वो कंगाल हो गया, उसका दुकान डूब गया. दुकान में जो पैसा था वो सब चंपट हो गया, खत्म हो गया. कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स ऑफ 3,000, प्लूटो हमको 3,000 रुपए नहीं दे सकता, तो भी हम क्या करेंगे? हो सकता है 2 मिनट के लिए हम रो ले, 2 गालियां उसको दे दे, बट इन 3,000 तो मिलने वाला है नहीं ना. सो ये 3,000 रुपीज आपको कस्टमर से भूल जाना है. ओके, देयरफॉर डेटर्स में से 30,000 में से आपको ये सबट्रैक्ट करना है. उसके बाद तो 1 स्टार फॉर डेटर. क्रिएट RDD at 5% on sundry debtors. RDD का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. तो यू हैव अ डाउट ऑन डेटर कि 5% भाग जाएंगे पैसा लेकर, तो इसके लिए आपने दूसरा स्टार डाला. 2 स्टार का मतलब है 3 लाइन्स. फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट मोटर कार. सो देयर इज 1 स्टार फॉर मोटर कार एंड मशीनरी, देयर इज 1 स्टार फॉर मशीनरी. सिक्स्थ, provide interest on partners capital. This was also explained to you completely, very simply. पूरा presentation है आपके लिए, same adjustment मैंने repeat किया है, so you can do the practice for this. Good thing, इसके लिए कोई star mark करने की जरूरत नहीं है. 7th, partners profit sharing ratio is in their capital, respective capital. अभी capital 60,000 है. So if you look at the explanation of this, the cancellation of 60,000 and 60,000 will give you 6:6, और cancel करोगे तो मिल जाएगा 1:1. So please note, the calculation when done by you will give you the ratio. Now this is going to be your task. And time for me to be telling you a bye-bye. I hope today's lecture has been simple, has been digestible by you. We will be regularly meeting. Slowly and steadily this chapter will progress ahead. New and new adjustments, new and new items in the trial balance will be incorporated. Okay, I am hoping the task assigned to you will be completed. I hope to see you soon. Take care.